Is my screen visible to you all? Yes, sir. Okay. So here what we have, as you can see on screen, as you can see that the transmission is taking place downwards as a beam. That is what we said, that echo sounder is transmitting pulses in the form of a beam vertically downwards. So it is basically vertically downwards. Center of the beam is vertical, but of course the sideways there are little bit of angle being created. In the bridge, what you have is this, the recorder. On the recorder, as you can see the recordings on screen. This is an electronic system. The recordings are seen on screen on electronic display. But there can be paper recorder also. The recording is done on paper. The processor, the oscillator, all that is here in this device. यहीं से सिग्नल जनरेट होता है जो नीचे ट्रांसड्यूसर को जाता है. ट्रांसड्यूसर रिसीविंग ट्रांसड्यूसर से वापस आता है. And using that signal, the printing is done on screen. Of course, you have certain control buttons. We will take a look at what are the controls available. There will be range switch, gain control, fixed marker, etc., etc. Contrast control, brightness, panel brightness. The number of controls may differ from device to device, but in general there will be certain kind of control. Like range selection, हर device में होगा. Gain control, हर device में होगा. Screen brilliance, panel brilliance, हर device में होगा. So look and feel may be different, but in general it will remain same. So we'll, as we have said, we'll be talking about basic principle, which we have already done. Characteristics, minimum maximum depth measurements, वो भी देख लिया. Block diagram, that also we have seen so far. Next we'll be picking up types of transducer. Then setting of transducer, कहाँ पे लगाएं उसको? Forward में, aft में, center में, कहाँ पे लगाएं? So few considerations about that. Then different type of recorders we'll be talking about. Then recorder से related, there are few problems and how those problems are solved is what we are going to look at. Ranging एक के साथ एक problem आती है, उसको हम phasing से कैसे ठीक कर सकते हैं. Basic controls के बारे में बात किया अभी हमने. We'll see what are the controls. Then there will be errors of echo sounder. Why there can be error in the echo sounder? We'll see that. Then some corrections when we are reading the depth on screen, maybe digitally displayed in digits also. Then what correction should be applied to that when we want to read it and compare with the charted depth? जो चार्ट में डेप्थ बता रहा है उसको इको साउंडर से मैच करने के लिए क्या करेक्शंस लगाने चाहिए, that we will see. Something of maintenance also, how to keep the system running in good condition so that it gives proper readings. Just read through. We have already covered it, so now just give a reading, see if it is making sense, if it is understood.
नहीं है तो बताइएगा फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, I hope everything is clear here. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, characteristics. Next, next example. जो यहाँ पे 2 into 10 minus 3 देख रहा है ब्रैकेट में, वो 10 to the power 3 है बेसिकली, 1000 rather -3, 10 to the power -3 मिली सेकेंड है। मिली मतलब 10 to the power -3। नेक्स्ट, एक सेकेंड वो छोड़ दीजिए, रीड दिस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी।
Next. Here what it is saying, that if one pulse is there, then second pulse, then third pulse. The time between two pulses, this will decide the maximum depth. This is the time available for the pulse to go down and come back. This is the time. जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतना डेप्थ तक जा सकता है सिग्नल। अगर पीआरएफ ज्यादा होगी, नजदीक नजदीक पल्स होंगे, that means pulses are closer, so time between pulses will be less, and so it can travel less distance while going and coming. So the maximum depth that you can read with a given PRF is decided by time between two consecutive pulses. Next. Example, every second there is a pulse. एक second का pulse repetition frequency है 1. Every second 1 pulse. Next. 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 Frequency. Next. This says that the echo sounder frequency should not be within audible range. जो हम सुन सकते हैं, जो शोर होता है, उससे बाहर होना चाहिए ताकि उन सब सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर सके. Next.
बहुत ज्यादा होएगा तो एटीन्यूएशन होएगी. Attenuation means loss of power. If I am producing a signal like this, as it is traveling, the signal keeps on reducing. यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे दूर जाते जाते कम हो. That's attenuation. It's losing power. So basically, attenuation is loss of power, which happens more in case of high frequency. High frequency में losses ज्यादा होते हैं, attenuation ज्यादा होता है. लो फ्रीक्वेंसी में एटीन्यूएशन कम होएगा. अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट किया तो इट विल ट्रैवल मोर. यू विल गेट सम सिग्नल at the same distance which is more than the high frequency. Next, next, next. This one is external factor, not echo sounder, but external factor. Next, next.
Next. Sorry. Harder the surface, better is the reflection. So rocky bottoms sounding will be better. If it is muddy water or sand, then there will be poor reflection. Next. Next. ये बात नहीं किया था, जनरली बात किया था हमने कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स ट्रांसमिट करते हैं, नॉट एट एन एंगल. So even when the ship is transmitting vertical signals, signal सीधे जा रही है, but if it is hitting a surface which is slanting like this, तो reflection जो है वो कम होगी. Chances है कि the reflections will go in this direction, but part may be received in this direction also. So angle of incidence on the surface does make a difference. Not only transmission, but also the angle of incidence at the surface. Block diagram. Most basic it is. ब्रिज में रिकॉर्डर रहता है, रिकॉर्डर से सिग्नल आती है, ऑसिलेटर में जाती है, ऑसिलेटर produces electrical signals. Oscillator is producing electrical signal, it is converted into sound waves. Echo is received back, again electrical signal converted, it is amplified and given to the recorder for recording. We will see later how the recording takes place when we are talking about how the echo sounder is doing the recording. We have already seen the formula T into T divided by 2. तो ये कैसे होता है रिकॉर्डर में वो हम सेपरेटली देखेंगे बाद में. Some explanation of the boxes that we have seen. Next. We are seeing that this can be, the transducer can be electrostrictive type or magnetostrictive type. These are the two types of transducers used with echo sounder, may also be used with Doppler log, because both are transmitting signals downwards. Doppler log at an angle, echo sounder vertically downwards. So next chapter is going to be the types of transducers, the electrostrictive and magnetostrictive transducers.
Next. 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 As we already have seen that PL is short for shallow waters, long for deep water. PRF is ulta, more for shallow water, less for deep water. तो जैसे ही रेंज स्केल सेलेक्ट करते हैं अलग अलग, शैलो वाटर्स के लिए रेंज सेलेक्ट करेंगे तो पीएफ पीआरएफ ज्यादा हो जाएगा, पीएल कम हो जाएगा. रेंज बढ़ाएंगे तो ऑपोजिट चेंज विल टेक प्लेस. पीएल विल बिकम लॉन्ग, पीआरएफ विल बिकम शॉर्ट. ऑल कंट्रोल फ्रॉम प्रोसेसर. नेक्स्ट. Next. Now coming to transducers. We'll go on the board for this. So let me set up the camera once again. All right, so block diagram हो गया. There are two types of transducers, as we said always. यहाँ पे transducer होता है transmission के लिए और reception के लिए. There can be two types. One is called electrostatic transducer. The other one is called magnetostrictive transducer. These are the two types of transducer. All of them, both of them have got their advantage and disadvantage. कभी कोई चीज perfect तो होती नहीं. You can't get everything right about something. You have to get something negative also. So दोनों के अपने benefits हैं, अपना disadvantage भी है. We will study them in general. First, we'll talk about electrostatic transducer. Electrostatic transducer is using a piece of stone. The stone, which is known as crystal. Crystal is a stone or something similar, which has got a very specific kind of molecular arrangement. एक खास arrangement होती है सारे molecules. That is why we call it crystal. What is done that opposite faces are cut away and there are then two opposite faces. जो piece of stone था उसको दो साइड से हमने काट दिया पैरेलल में. So we now have this. What is observed here, what the principle that it uses
is that when this crystal is sandwiched between two steel plates, these are the steel plates, and this one is the crystal. There is specific behavior shown by this particular crystal. What we see, if we connect something called galvanometer to read small currents, हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे जो रीड कर सकता है अगर करंट होगी तो। अब क्या करते हैं कि इस स्टील प्लेट को हम वाइब्रेट करते हैं, प्रेशर डालते हैं इनके ऊपर, ऑल्टरनेटिंग वाइब्रेशन, एक बार दबाते हैं ऐसे। So when there is this vibration or pressure applied onto the crystal through the steel plates, what we see कि जैसे ये वाइब्रेट करता है, there is fluctuation here. What is the meaning? That means when it is compressed, when it is getting mechanical pressure, तो यहाँ पे electrical signal generate होता है. There is current flowing through this. Also, there is opposite thing which is observed. Opposite means what? कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया इसको। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो देखते हैं कि ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेशन इज सेम एट द सेम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमने दिया उसी फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करता है। So this is what we wanted for transducer. ट्रांसड्यूसर का क्या काम था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना और वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये कर रहा है। जब हमने प्रेशर दिया इसको तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिली, जब हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया इसको तो वाइब्रेशन मिली। So that is what we wanted. This particular behavior was noted by a scientist called Mr. Pizzo. So this particular phenomena is called as piezoelectric effect. This particular phenomena, as we have seen, that the crystal, when applied with pressure, produces current. When applied with current, produces vibrations. This principle is called piezoelectric effect. The same principle is used to make it a transducer. What do we do? How is it utilized in converting into a transducer? So first of all, the ship is there. Ship के बीच में होल करते हैं, नीचे का प्लेट काट देते हैं. Then we have the crystal which is placed here, something like flush with the keel. There is a steel plate which is placed on top of that, and the steel plate is fastened to the deck plate, tank bottom. Now this crystal is touching the plate. There is another plate which is installed at the bottom of the crystal. So now this is the crystal which is within the two steel plates. Remember that we had in the bridge the recorder and processor. वहां से oscillator था जो electrical signals produce कर रहा था. This electrical signal is given between the two plates.
when the electrical signal is given, what is going to happen? Vibration. This will start to vibrate. But since one end is fixed with the ship's hull, there is only one suspended plate which can move. So ये vibrate करने लगता है, and that vibration is transmitted as signals into the water vertically downwards. The signals are always transmitted vertical to the surface. So this steel plate has to be horizontal so that the signals are transmitted vertically downwards. क्योंकि ये नहीं हिल सकता, बंधा हुआ है, नट बोल्ट से फास्ट किया हुआ है, so only surface which can vibrate is this. After transmission, the signal is stopped. एक पल्स हो गई ट्रांसमिट, अब यहां से यहां के बीच में टाइम गैप है डिपेंडिंग ऑन द PRF. This is the time during which the transmission is happening. Wave is proceeding through the water. It hits the seabed and the signal is reflected back, and again it hits the steel plate. This basically is mechanical vibration. The sound wave is the mechanical vibration of the molecules of the medium. So this is putting pressure on the lower plate. On the other side, there is this amplifier जिसमें electrical signal convert होकर के मिलता है. Amplifier then will amplify it to whatever level we want. Here we have a gain control. तो गेन से हम ज्यादा कम कर सकते हैं कि कितना बढ़ाना है या कम करना है. This signal is then given to the recorder. The recorder will do the recording of the depth. So this is how the electrostatic transducer is working. Since it is working on piezoelectric effect, this transducer is also known as piezostrictive transducer. This type of device is also known as piezostrictive transducer. It is not something new. You are already seeing this kind of behavior. There are, normal cigarette lighters that you have. They are also using the same principle, piezoelectric effect only. Say, for example, if this is the lighter, when we are pressing it, there is spring load, और स्प्रिंग लोड के बाद जब क्लिक करते हैं तो एक टाइम के बाद रिलीज होता है. That means because of that spring load and locking system, there is a sharp knock on the piezoelectric element here. There is a crystal inside this, and that produces the spark. Meanwhile, when you are pressing, the gas is released. वो spark जो है gas को ignite करता है, and the lighter is giving flame. So even the cigarette lighters are using the same kind of system. There is a crystal in that, and that crystal, when struck, produces a high amount of current because the pressure is heavy. तो spark निकलता है सिर्फ उस particular click के समय. Now talking about the advantage of this, since the transducer is in direct contact of the water,
इट इज वेरी एनर्जी एफिशिएंट, सारा का सारा वाइब्रेशन जो है पानी में ट्रांसमिट हो जाता है। इट्स वेरी एनर्जी एफिशिएंट, लो पावर सिस्टम है, थोड़ा सा पावर दो और काम होता है। बट बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है इसका? कैन यू आइडेंटिफाई द बिगेस्ट ड्रॉबैक हियर? ओ, मैंने गलती कर दिया, पूछ लिया आपसे। नो, आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज द हल इज ब्रीच्ड। हल को काटते हैं, इट इज प्लेस्ड एज installation is pierced hull. This is pierced hull installation, which is the main disadvantage. That means it cannot be repaired while afloat. It can be repaired only when in dry dock. क्योंकि हम इसको हटा के खोल नहीं सकते, खोलेंगे तो पानी घुसेगा. So that is the biggest advantage. Sorry, disadvantage. Advantage is that it is very energy efficient. So this is the electrostatic transducer. Next one is magnetostatic. Magnetostatic transducer. This utilizes magnetism. In what way? A simple kind of ferromagnetic material, let us say iron or nickel or cobalt. These are magnetic materials or ferromagnetic materials. That means they can be magnetized easy. The material molecules are all over the matter, but it is not acting as a magnet. ऐसा क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो है that is a kind of magnet. The molecules of the material is acting like a small magnet, each one of them. But चूंकि वो deranged हैं, सब बिखरे पड़े हुए हैं, किसी का polarity इधर, किसी का उधर, किसी का उधर, किसी का उधर. That is why this piece of metal, nickel, cobalt, iron, is not acting like a magnet. सब बिखरे पड़े हुए. But if we have a coil जो इसके ऊपर लपेट दें हम in the form of a solenoid, इसके coil को solenoid coil बोलते हैं क्योंकि ट्यूब जैसा बनता है, रिंग का, स्प्रिंग जैसा, उसको solenoid बोलते हैं. तो solenoid coil अगर हमने डाल दिया इसके ऊपर और इसमें करंट दे दी, तो you must remember the EM log और उसके डिस्कशन. The current will produce a magnetic field around it. The current has got a magnetic effect. Magnetism will be created around this bar, piece of material, and this magnetic lines of forces will try to align them once again in given structure. सारे अरेंज हो जाएंगे. अभी मैग्नेटिज्म भी पढ़ा था आपने, उसमें भी आपने देखा था. They are all aligned in same way. That means this piece is now magnetized. When this kind of situation is happening, there is interaction between all similar poles. सारे के सारे टाइनी मैग्नेट्स जो हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, और जो इतना मटेरियल जो था
चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है। जैसे ही मैग्नेट बनता है ये, तो मैग्नेट का साइज छोटा हो जाता है। जब हमने करंट दिया, करंट हटाया तो फिर से बिखर गए। सॉफ्ट आयरन, यू रिमेंबर फ्रॉम द मैग्नेटिक कंपास? Yes, Yes, sir. sir. सॉफ्ट Yes. आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजी, डीमैग्नेटाइज्ड इजी। तो जब करंट दिया तो मैग्नेटाइज हो गई, जब करंट हटाया तो डीमैग्नेटाइज हो गए। डीमैग्नेटाइज मतलब फिर बिखर गए, बिखर गए तो वापस चौड़ा हो जाता है। फिर से करंट दिया तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कम करंट हटाया, मैग्नेटिक फील्ड हटाया, फिर से फैल जाता है। सो इफ वी आर अप्लाइंग ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट जीरो, मैक्सिमम एक डायरेक्शन में, करंट मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम फील्ड क्रिएट हो गया, फिर जीरो हो गई, खत्म हो गया, फिर से उल्टे डायरेक्शन में करंट जो इधर को जा रही थी अब वापस करंट आएगी। तो अगर हमने यहाँ पे एसी दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, तो इस साइकिल के लिए एक बार कॉन्ट्रैक्शन होएगा, छोटा हो जाएगा ये, जब यहाँ पे आएगा तो फिर से फैल जाएगा, फिर से ये साइकिल आएगी तो फिर से हो जाएगा। हालांकि पोलैरिटी बदल जाएगी सबकी, जो नॉर्थ साउथ था वो साउथ नॉर्थ होगा, लेकिन फिर से इंटरैक्शन तो होगी क्योंकि सारे साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ हो गए। तो एक बार यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा होना, और एक बार यहां पे होता है। एक साइकिल जो है, इन वन साइकिल ऑफ एसी द कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग एट टू प्लेसेस, दो बार होता है कॉन्ट्रैक्शन, और वापस बड़ा भी होता है दो बार। जीरो था, जीरो से कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर बढ़ गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर वापस बढ़ गया साइकिल। दैट मीन्स एक साइकिल ऑफ सिग्नल देयर आर टू वाइब्रेशंस। Now this is what is the principle which is used for making a transducer, and that we are calling as magnetostriction. This process or phenomena is called magnetostriction. How it is used in case of ship? In the ship, normally in the freshwater tank, there is this annular disk of ferromagnetic materials. Annular disk मतलब CD DVD जैसा होता है, पतला शीट मेटल, सर्कुलर फॉर्म में, और बीच में होल। ऐसे ढेर सारे शीट्स को लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल है ये, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नॉर्मली निकेल, क्योंकि निकेल में रस्ट नहीं लगता, मैग्नेटिक भी है, रस्ट भी नहीं लगता, तो लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे एनुलर डिस्क लेते हैं, ढेर सारे ले लेते हैं। ढेर सारे डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, स्टैक कर देते हैं, तो पूरा ब्लॉक बन गया। जैसे मान लीजिए 15 CD 20 CD आपने लिया और सबको एक साथ रखा, तो इतना मोटा बन गया, वैसा बन गया। इसमें there is oil which is placed here like this. कॉपर वायर का कॉइल डाल देते हैं, जो बाहर से जाता है भीतर होके वापस आता है भीतर जाके। So the coil is made. This is the magnetizing coil. Now what happens when AC is supplied? This will begin to vibrate. एक साइकिल पे दो वाइब्रेशन होगी, साइज जो है इसका चेंज होगा। तो अगर 10 किलोहर्ट्ज दिया आपने एसी, तो ये कितनी बार वाइब्रेट करेगा?
20 किलोहर्ट्ज। जितना होगा इंटू 2, जितना एसी आपने दिया उसका 2 बार वाइब्रेशन होगा। Now this system is placed here in the fresh water tank. There is upper plate which is held fast again. The lower plate is touching the bottom. Remember, इसमें होल नहीं काटते। This system is sitting onto the hull plate. टच कर रहा है उसको, लेकिन हमने ब्रीच नहीं किया है, हल को काटा नहीं है। इट इज इंटरनल इंस्टॉलेशन। It is internal installation. So when AC is supplied to it, it will vibrate twice. This vibration is basically transferred to the steel plate here. चूंकि steel plate is touching this, तो ये जो vibration है, that is getting transferred to the steel hull plate. Now the hull plates begin to vibrate because of this vibration, or since the water is here, these vibrations are also transferred to the water, and there is signal which is transmitted. But as you can think from a common sense also, that is steel plate को इतना 10 mm, 12 mm, 15 mm की steel plate को move करने में इसकी तो जान निकल जाएगी, which happens actually. So the amount of power which is transmitted here is only about 15%. बाकी 85% यहीं पे खत्म हो जाता है स्टील प्लेट में. That means it is not power efficient. There are losses. So this one is an advantage because it is internal installation. कभी भी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं. हल की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रीच नहीं हुई है, so that is an advantage. But that it is less power efficient. Only small amount of energy is transferred, and this 15% depends on the plate of thickness of the plate, hull plate. ज्यादा मोटा होगा तो और इससे कम हो जाएगा, अगर पतली होगी तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. So this one is disadvantage. So this is what we have. The types of transducers: electrostatic and magnetostatic transducer. Any questions? फ्रेश वाटर में क्यों होता है? हाँ जी, फ्रेश वाटर में क्यों होता है ये? फ्रेश वाटर चूंकि पानी साफ होती है और मडी नहीं होगा, अगर डीबी टैंक्स में वगैरह में लगा दिया या कहीं और लगा दिया, पीएसटीज में लगा दिया, तो वहां तो पानी आना जाना होता रहता है, गंदा पानी आएगा, तो दैट विल डैमेज द थिंग. तो हमें बॉटम पे तो जाना ही है, सबसे नीचे तो पहुंचना ही है, तो और कहाँ पहुंचे? बॉटम प्लेट पे तो लगाना है, तो और कहाँ पहुंच सकते हैं? अलग अलग टैंक्स है हमारे पास, उसमें मडी वाटर आता है, कभी बैलास्टिंग करते हैं, डी बैलास्टिंग करते हैं, बहुत गंदा होता है. फ्रेश वाटर टैंक हम लोग नॉर्मली नीट मेंटेन करके रखते हैं, तो उसकी हाउसिंग बना देते हैं कि फ्रेश वाटर टैंक में रहे, नीचे भी पहुंच गया, साफ जगह में भी है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम पानी इवैक्यूएट करके वहां पे अप्रोच भी कर सकते हैं इजी. ओके सर. Any other question? Anyone else? Any other question? No questions.
So we'll meet again in the next class. We'll take it forward. We'll talk about how the recorder works. Next class में also we'll talk about ranging and phasing, जो कि important question है. और भी देखेंगे कुछ और चीजें, नॉइज क्या होती है, क्रॉस नॉइज क्या होता है, एयरेशन क्या होता है, ऐसी चीजें देखेंगे इको साउंडर के बारे में. बाय बाय, साइनिंग ऑफ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, हेलो, sir. बाय बाय, साइनिंग ऑफ.